हाय गाइस, माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। बात करेंगे malignant melanoma choroid के मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राऑकुलर ट्यूमर एडल्ट यूजुअली सीन बिटवीन 40 से 70 ईयर एज हेयर इन द ब्लैक एंड comparatively more common in white. It arises from neural crest-derived pigmented cell of uvea and dendrinocyst. The solitary tumor is usually unilateral. Choroid क्या है? आँख का एक भाग होता है जिसमें कैंसर शुरुआत में। तो इसकी पैथोलॉजी देखते हैं और ग्रास पैथोलॉजी में भी arises from pre-existing नेवियर and Devovior melanocyst stroma cell may be occur in two forms. Circumscribes the denucleated tumor. It appear flat, straight gray area and become arises pigmented and eventually ruptured through the membranes and grow of the tumor producing exudative retinal detachment. Detachment होता है कि रेटिना का हट जाना, मतलब रिप्लेस हो जाना. Huge flat in malignant melanoma. It's slow uvea without forming tumor masses और 5% केस its symptom may be occur in later. पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी है, पहला है माइक्रोस्कोपिक यूवियल मेलानोमा और 4 types. Cell melanoma composed of spindle shaped cell. 45% of all tumors such as tumor may be best prognosis 80% 10-year survival. Epithelioid cell melanoma of large oval round तथा plano cell with the large nuclei and abundant bilic cytoplasm. This may be tumor has been the Rest 35% 10-year survival and this make up 5% of tumor. Melanoma. These are composed both spindle and epithelioidal. Carry an intermediate prognosis 45% 10% survival. These make up 45% of all tumor. Aortic melanoma. Melanomas makes up remaining 5% all tumor. In these tumors predominant and unrecognizable. क्लिनिकल फीचर देखते हैं. डिस्क्रिप्शन. क्लिनिकल फीचर डिवाइडिंग 4 स्टेज. यो स्टेज सिम्टम ड्यूरिंग दिस स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड साइज ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर लोकलाइज इन पेरिफेरी में नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम फ्रॉम पोस्टीरियर पोल with yearly visual loss. Associate exudative retinal detachment may be produced marked loss of vision. Fundus examination during the revealed former choroidal appear as elevate oval mass and rarely tumor may be a melanotic pathogen appearing as pigmented epithelium due to